हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केम छो का सकाय वेलकम back to my channel the insight generator power up your data insights. So guys, I'm again back with another videos, and the agenda of this video is to discuss few transformations features like split columns, replace values, extract, parse, and then format, right? So let's get started without making any further delays. But before that, I would request you guys, please like, share, subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon so that if I update any videos, you guys are not going to miss even a single updates. तो चलो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले गाइज हमें जाना पड़ेगा डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस इंजन में, यानी पावर क्वेरी एडिटर, दैट्स कॉल्ड ETL टूल. उसके लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशंस डेटा पे जाना होगा, राइट. एंड फाइनली वी आर ऑन दिस पावर क्वेरी एडिटर मोड, जहाँ पे हम अपने डेटा की क्लीनिंग कर सकते हैं, हम अपने डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं, डेटा को मोल्ड कर सकते हैं, शेपिंग कर सकते हैं, राइट. तो सबसे जो हमारा पहला टॉपिक है आज की वीडियो के एजेंडा का, वो है स्प्लिट कॉलम. तो हम स्प्लिट कॉलम देखेंगे आज. गाइज अगर आप ट्रांसफॉर्म टैब में जाते हो तो आपको ऑप्शंस मिलता है स्प्लिट कॉलम का, राइट. सो क्या होता है ये स्प्लिट कॉलम, और इसको हम लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके अभी देखते हैं, राइट. तो हमारे पास एक कस्टमर का टेबल है. इस कस्टमर टेबल में कस्टमर्स की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लाइक फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, बर्थ डेट है, राइट, मैरिटल स्टेटस है. लेकिन मुझे ईमेल एड्रेस पे काम करना है, तो मैंने ईमेल एड्रेस वाले कॉलम को यहाँ पे पिक किया है, राइट. क्या होता है स्प्लिट कॉलम, अब समझते हैं. गाइस स्प्लिट कॉलम क्या करते हैं, जिस भी कॉलम पे आप अप्लाई करते हो, तो जिसके बेसिस पे अप्लाई करते हो ना, दैट इज़ कॉल्ड डिलिमिटर. यानी उस डिलिमिटर के बेसिस पे ये कॉलम हमारा दो डिफरेंट कॉलम्स में स्प्लिट हो जाएगा. Many of you might not be aware of what delimiter is. So just to brief you in short, क्या होता है delimiter? Guys, delimiter is nothing but it's just a characters or the sequence of characters that is used to separate and distinguish individual items within a large chunk of text or the data. इसका मतलब ये हुआ गाइस कि अगर ये इस पूरे टेक्स्ट में अगर मुझे @ एक डिलिमिटर है, अगर इसके बेसिस पे स्प्लिट करना है, तो ये क्या करेगा, पावर क्वेरी एडिटर क्या करेगा, @ से पहले जो भी हमारे कैरेक्टर्स हैं उनको स्प्लिट करके एक सेपरेट कॉलम क्रिएट करेगा, और @ के बाद जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको सेपरेट करके एक दूसरा कॉलम क्रिएट करेगा, राइट. लेट्स से फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक हाइफन है, छोटा सा हाइफन है. अगर मैं इस डिलिमिटर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिलिमिटर्स, लाइक, तो अगर मैं इस डिलिमिटर के बेसिस पे इस कॉलम को स्प्लिट करता हूँ, तो यानी इस हाइफन, छोटे वाले हाइफन से पहले जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो स्प्लिट होके एक सेपरेट कॉलम क्रिएट करेगा, और हाइफन के बाद जो भी कैरेक्टर्स हैं वो एक सेपरेट कॉलम में स्प्लिटेड हो जाएगा और एक सेपरेट कॉलम क्रिएट करेगा. इट मीन्स हमारे डिलिमिटर के लेफ्ट हैंड साइड और डिलिमिटर के राइट हैंड साइड में जो भी कैरेक्टर्स हैं उसको स्प्लिट करके दो कॉलम्स में क्रिएट कर देगा. चलो देखते हैं लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके. तो सबसे पहले जैसे ही आप स्प्लिट कॉलम पे क्लिक करते हो, आपके पास एक नंबर ऑफ ऑप्शंस दिखता है, जहाँ पे लाइक बाय डिलिमिटर होता है, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होता है, एंड शो ऑन. तो अभी हम जो स्प्लिट करने जा रहे हैं कॉलम को, वो डिलिमिटर के बेसिस पे करने जा रहे हैं, तो हमें चूज करना है बाय डिलिमिटर, राइट. सो व्हेन यू विल क्लिक द बाय डिलिमिटर्स, अ विंडो विल पॉप अप राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन्स, राइट. तो कुछ डिलिमिटर्स हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे ऑप्शंस में डिस्प्ले कर रहे होते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है, लाइक कोलन, कॉमा, इक्वल साइंस, सेमी कॉलन, स्पेस, टैब. मान लो जो आप डिलिमिटर के बेसिस पे कॉलम्स को स्प्लिट करना चाहते हो, वो डिलिमिटर इस बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे. इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप कॉलम को स्प्लिट नहीं करोगे, ऑफकोर्स करोगे. यहाँ पे हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है, यू कैन इनपुट योर डिलिमिटर्स. मान लो अगर आपका हैश होता, तो हम यहाँ एज अ डिलिमिटर हैश इनपुट करते हैं. अगर आपका डिलिमिटर एम्परसेंट रहता, तो हम डिलिमिटर को एम्परसेंट यहाँ इनपुट करते हैं. बट हमारे ईमेल एड्रेस में @ है, यानी हमारे पास @ से पहले जो भी होता है वो यूज़र नेम होता है. हम यूज़र नेम को स्प्लिट करना चाहते हैं, राइट. तो हमने यहाँ @ प्रोवाइड कर दिया, और स्प्लिट एड लेफ्ट मोस्ट डिलिमिटर, राइट मोस्ट डिलिमिटर, ईच ऑकरेंसेस ऑफ द डिलिमिटर. हम यहाँ ईच ऑकरेंसेस ऑफ द डिलिमिटर चूज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे कैरेक्टर्स में मल्टीपल @ नहीं है, क्योंकि हर जहाँ डिलिमिटर @ आएगा वहाँ वो स्प्लिट कर देगा. हम सिर्फ लेफ्ट मोस्ट डिलिमिटर ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही डिलिमिटर है, राइट. नाउ व्हेन आई विल हिट ओके, यू विल सी द चेंजेस व्हाट इज गोइंग टू हैपन राइट नाउ. अभी आप देखोगे गाइज, जो हमारे ईमेल एड्रेस का कॉलम था, @ से पहले जो भी कैरेक्टर्स थे यानी यूज़र नेम थे, वो एक सिंगल कॉलम में स्प्लिट होके क्रिएट हो गया है,
और जो एट द रेट के बाद जो भी हमारे कैरेक्टर्स थे वो एक दूसरे कॉलम में स्प्लिट हो चुके हैं. सो फाइनली वी हैव 2 columns, राइट. So this is what split column is all about, right? Guys, I'm just going to delete the steps that have been recorded here, right? Because I don't want to do that. Just for the sake of knowledge and information, I wanted to show you that how a split column works actually. अब guys, मैं अपने next topic पे move करता हूँ, that is called replace values. हमारे पास एक कॉलम है, जेंडर का कॉलम है, जिसमें हमारे मेल और फीमेल है. मेल M stands for मेल, F stands for फीमेल. हमें रिप्लेस करना है कोई भी वैल्यूज. यू कैन अप्लाई दिस रिप्लेस वैल्यूज ऑन एनी ऑफ दिस कॉलम्स. मान लो अभी फिलहाल एग्जांपल्स के लिए मैं जेंडर को ऑप्ट कर रहा हूँ फॉर द लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस. So under the transform tab, you will have options called replace value. When you will click on the replace values, you will see 2 options. One is replace values, other one is replaces errors. Since we don't have any errors, जो आप जब एरर आएगा तो हम देखेंगे कैसे रिप्लेस करते हैं एरर को. अभी हमारे पास कोई एरर नहीं है, हमारे पास वैल्यूज हैं. सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिप्लेस द वैल्यूज. सो इट विल आस्क यू 2 वैल्यूज टू इनपुट. फर्स्ट थिंग, व्हाट डू यू वांट टू रिप्लेस? फर्स्ट फाइंड दैट कैरेक्टर्स. हमें पहले m को फाइंड आउट करना है, और जहाँ जहाँ m आएगा एंड दैट mi इज टू बी रिप्लेस्ड विथ मेल, राइट. मैंने मेल कर दिया. जैसे ही मैं ओके हिट करूँगा, यू विल सी ऑल m हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद द कैरेक्टर्स मेल. Likewise, if you want to replace again f, it means the f is to be replaced with female, right? When I will hit OK, you will see now all f character has been replaced with the female. So this is how and the replace values works actually. Now I'm just moving on to the extract. What is extract? You will see an option extract, right? I'm again going back to the email address column and I will let you know कि क्या डिफरेंस होता है इस स्प्लिट कॉलम में और एक्सट्रैक्ट कॉलम में. गाइस, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से पहले एक मैं बेसिक डिफरेंस क्लियर कर दूं. हमारे पास एक ईमेल एड्रेस का कॉलम है, हमें इसको स्प्लिट नहीं करना है इस टाइम हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना है. यानी यू आर गोइंग टू टेक आउट फ्यू पर्टिकुलर कैरेक्टर्स आउट ऑफ दिस इंटायर स्ट्रिंग ऑफ द कैरेक्टर्स, राइट. मान लो आपको एट द रेट से पहले सिर्फ वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करना है, एंड जो आपके ओरिजिनल कॉलम्स है ईमेल एड्रेस की, दैट विल रिमेन इंटैक्ट. उससे आपको नहीं छेड़ना है, राइट. तो हम क्या करेंगे उसके लिए? गाइस, मैंने आपको अपने बहुत पहले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम में क्या डिफरेंसेस होता है. ट्रांसफॉर्म कॉलम जो होता है, ट्रांसफॉर्म में आप जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, वो आपके एग्जिस्टिंग कॉलम्स को छेड़ता है और एग्जिस्टिंग कॉलम्स को रिप्लेस कर देता है नए कॉलम के साथ. लेकिन जब आप ऐड कॉलम में वही काम करते हो, क्योंकि ऐड कॉलम में भी आपके पास एक्सट्रैक्ट के ऑप्शंस आएंगे, पास के ऑप्शंस आएंगे, फॉर्मेट के ऑप्शंस आएंगे. तो ये मैं ऐड कॉलम में करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपका जो ओरिजिनल कॉलम इंटैक्ट रहेगा, उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है. इसमें से ले से फॉर एग्जाम्पल कि हमें यूज़र नेम चाहिए. हर ईमेल एड्रेस में एट द रेट से पहले हमारे पास यूज़र नेम होता है. व्हेन आई विल गो टू एक्सट्रैक्ट इट, सो यू विल सी you want to extract based on the length, first characters, last characters, range, text before the delimiter, text after the delimiter, and text between the delimiters. Here I want the username, and username is always before the at the rate, and at the rate is a delimiter here, right? So I'm just going to choose your text before the delimiter, right? And here I need to input the delimiter. So here at the rate is the delimiter. So when you will hit OK, you will see your original email address will remain same. There is no changes into this one. So extract will basically extract the username. It means all the characters before the delimiter, and it will just give you as a column, right? You can just simply rename the name of the column like username. So this is a username, and this is how the extract works. I can show you one more thing. If you want, let's say the problem statement is, I want all the characters after the at the rate and before this hyphen. After this at the rate and before this hyphen, you will see adventure. In all the records, all the rows, you'll be getting adventures. Let's do this. How will you get that? So I'm going to choose this time text between the delimiters. It means the delimiter, all the characters after the delimiter at the rate, and all the characters before the delimiter hyphen. So you will see all the characters that will lie between the at the rate and hyphen. It will give you
the characters as a new column. So you can see at the end of this videos. I think something is fishy, guys. I'm not sure what just happened. 1 second. Let me just choose email address again. Extract text between the delimiters. @ and now hyphen. I'm going to do this right now. Yes, we got it. Adventures, right? So if you'll see, the characters between the @ and hyphen is adventures. So I'm just going to delete this record. This is just for the sake of knowledge and the information, guys. Right? Now I'm just moving on to my the next topic, that is called format, right? How to format this. So format option is available in both the cases, even in transform, even in the add columns, you will see the format options, right? So guys, if you want to see that, let's say for example, we have we have full name, right? And the full name is, all the letters are capitalized. I want only the first letter of the name has to be capital, right? So I'm just going to format here. So formatting can be done on many bases, like we have a number of options. Lowercase, if you will click lowercase, your full name will be converted into, once again, let me choose the full name column. First we have to choose the column, then only it will work, right? Now I'm just going to use like lowercase, right? So the whole name has been converted into the lower cases. If you will convert this in the uppercase, it will be converted into the uppercase, right? If you want to capitalize each word, so this is each word has been capitalized, and this is a well formatted full name, right? So, and this is how the format works. Now the last option is left is parse. How parse works? So guys, parse जो हमारा फीचर्स है ना, वो XML एंड JSON फाइल के साथ ही काम करता है. उसके लिए मुझे एक JSON फाइल इंपोर्ट करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा इस Power Query एडिटर इन्वायरमेंट में, राइट? So like new source पे भी जाना पड़ेगा, and then we have to go to the text and CSV. Here is a JSON file, right? So what is a JSON file? Let it load first. I will show you that. So this is how the JSON file looks like. So let me first extract this data. So I don't think you guys are able to understand this table. This is basically unorganized way, right? And this is very unusual, and no one can understand what is it actually. No one can understand this, right? So हमें इसे formatting करना है, तो हम इसमें से parsing करेंगे guys. लेकिन उसके पहले सबसे पहले इसे हम split कर लेते हैं, right? तो split से पहले हमारे पास एक options आता है by positions. क्या होता है ये by positions? मैं आपको बताता हूँ. The Power BI is smart enough to detect the position. आप ये पोजीशंस खुद ही डिटेक्ट कर लेते हैं. चलो देखते हैं इस पोजीशन के बेसिस पे ये इस पूरे डेटा को कैसे स्प्लिट करता है, राइट? सो जैसे मैं ओके हिट करूँगा गाइज, आप देख सकते हो कि इट हैज़ बीन फाइनली स्प्लिटेड इन नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट? इन नंबर ऑफ कॉलम्स. नाउ I'm just going to use first row as a header. I'm just going to promote this first row as a header, right? So finally I have promoted as a header, and few columns are not relevant. Then the information that I really want to parse, that I really want to extract, is from JSON result, and the rest of the columns is not relevant. So I'm just going to remove the columns and remove the other columns. So it will basically remove the other columns apart from the selected one. So I'm just going to delete that. Now this JSON result is finally here, right? Now how parse works and how is going to make it transform. So when I will choose this JSON file, you will see it has been transformed, right? It has been parsed, but how will it look like? Basically, when you merge the two tables, the entire table is get imported, entire table gets merged, and it is really looking like same as the merge. When you will click on double arrow here, so you want to parse everything, right? So I'm simply just going to hit OK, and now you will say what you are actually looking for, like returns, Mumbai, Chennai, departure date, return date, fly adults. So there are a few more columns are there, and this is how the parse works. So in these videos, guys, we have just covered mainly what is split columns, format, right, extract and parse. That's all for these videos. Let's catch up in the next one. Like, thank you so much guys for watching my videos,
and giving me a lot of supports.